Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. And we start with technical and derivatives outlook. So yesterday we saw that Nifty and Bank Nifty both has rallied on the upside and both traded with positive bias. The Nifty was up by 50 points, whereas Bank Nifty was up by 500 points. Bank Nifty, this Nifty has now closed at 18,600 levels, and mainly the PSU and private banks were the one which led the momentum, and few metal stock were also which contributed to this rally. On the weaker side, the pharma, healthcare, and realty were the counters which remained under pressure, and this was trading sideways. So we believe that Nifty is poised for higher side breakout. The lowest 18,500 and 18,400 is likely to continue the demand zone, and higher side 19,000 and after 19,000, 19,500 should be the step-by-step upside for the Nifty. We are having a positive view on the for the Nifty index. Coming to Bank Nifty was strongly holding to 43,000 level for more than 10-15 trading session, and now it has made a base of 43,000 and given a breakout. So the there was a highest increase in open interest by more than 11%. So this is a very strong sign for the Bank Nifty. So Bank Nifty, we think it should be heading for 44,500, 45,000 over the next few trading sessions. So bias is strongly positive. The support for the Bank Nifty with immediate levels is 43,000, and if 43,000 is broken, then 42,500, 42,000, that can be a trading kind of view, but that doesn't look. Currently, we don't have that view, but 43,000 will act as strong base. Then coming to the derivatives data, Nifty futures are added a witness a short covering in yesterday's session to the tune of minus 1.48%, which was a decline by 1.89 thousand shares. The PCR remained at 0.76 versus 0.85 levels. The major additions were seen at 19,000 call options by 86.82 million shares, then 18,700 call options by 86.22 million shares. On the put front option, 18,000 put by 89.36 million shares, and then 18,500 put by 60.08 million shares. Coming to Bank Nifty has added a fresh longs by 11.41% increase in OI, which was the addition of 3.43 lakh shares. The PCR was the day before, the PCR was 0.77, and yesterday's session the PCR was 1.25%, which is a very strong sign. The major additions were seen at 43,500 put options by 52.06 million shares and 43,600 call options by 50.43 million shares. The top three long builders are HFC, AMC, Siemens, PFC, and top three short builders are Crompton, Delta Crop, and Alchem. Coming to FI data, FI has marginally added long positions close to 7,000 contracts, and overall net long by 36,000 contracts, and net long short ratio is 60%. In cash, FI has sold 1,131 crores, and DI has bought 772 crores. Lastly, from the sector point of view, we believe that banking, cement, and metals are going to outperform. They are likely to be the leaders within the banking. IndusInd Bank, CUB, and Bank of Baroda we are liking. Coming to cement, Ramco Cement and Ambuja Cements we are liking, and in metals, Hindalco and NMDC is something which is looking very strong positive on charts. Lastly, from the volume front, Gujarat State Fertilizers, Ramco Cement, and Gujarat Ambuja Exporter. These are the counters which has given a very good volume breakout. So I think that can be seen as a positional bet. So that's all from my end. I'll hand out to Archana Madam for more research updates. Thank you. Thank you, Brijesh. Good morning, team. So, few updates from my side, starting with Adani Enterprises. The company has acquired 100% stake in alluvial minerals resources from Adani Infra, and it is engaged in mining of minerals and ores and other allied activities. On Max Financial Services, the company has completed acquisition of balance 5.1% stake in Max Life Insurance Company from Mitsui Sumitomo Insurance Company, Japan. After this transaction, its shareholding in Max Life stands at increase to 87%. On Sun Pharma, the company in its clarification note after import alert for halal facility says it is not revising the revenue guidance for current financial year, and also there will be no impact on specialty revenues.
The US supplies from Halol contributed approximately 3% of the consolidated revenue for FY 2022, including sales from exempted products. The US FDA has excluded 14 products from its import alert subject to certain conditions. On RedGain Travel Technologies, the subsidiary RedGain Technologies UK has incorporated RedGain Technologies LLC in Sharjah, UAE. The objective of the incorporation of the company in UAE include the data processing services, software as a service, marketing technology services, and distribution as a service. This new entity formation would strengthen the company's organic growth strategy. Some update on the road infra. As per MOT, road construction in November 2022 at an all India level was at 706 kilometer, which is 6% up YY. H2 is expected to see a good pickup in road construction and awarding. Mr. Gadkari also announced that MOT will launch its surety bond insurance product for infra sector on December 19, and this will help to boost the liquidity in the infrastructure sector by the freeing up contractors working capital stuck in the bank guarantees. As per media reports, government is planning to allocate 30% via more funds for road ministry to speed up the construction. This is positive development for the sector, and we currently prefer PNC infra and PSP project in the road infra side. We attended HUL conference call on acquisition of two entities. So HUL has entered the health and well-being segment category with strategic investment in Oziva and well-being nutrition. Oziva, it was launched in 2016. It's a healthcare brand focused on niche spaces like lifestyle, protein, hair, etc. HUL will acquire 51% stake through a combination of primary infusion and secondary buyout for a cash consideration of 264 crores. Balance 49% will be acquired at the end of 36 months on the pre-agreed valuation criteria. It also acquired Wellbeing Nutrition, founded in 2019. It is focused on convenience of consumption. This includes the meals, slow release capsules, company's digital first brand expanding offline presence. HUL will acquire 20% stake through a combination of primary infusion and secondary buyout for a cash consideration of 70 crores. Both the deals company expect to be completed in next 1 to 3 months, subject to conditions. We currently have holding on the stock with a target price of 2619. On ITC management has said that they see uptick in the premium brands in the rural areas. The company is witnessing encouraging growth in the rural markets on the back of digitization of the entire rural distribution network. This bodes positive for the company. We have holding on the stock with a target price of 380. So that's it from my side. Now I request Kshitija to take it over from here. Thank you, and over to you, Kshitija. Thank you, ma'am. Good morning, everyone. A few updates from my side. Jindal Steel and Power JSPL company has completed the acquisition of Monet Power, which has a 1050 megawatt under the construction plant in Odisha. So full payment of rupees 410 crore. The next update on ICICI Bank, the company has raised 5,000 crore through infrastructure bond for funding projects in segment like power, roads, etc. The coupon for 7 years paper was fixed at 7.60% and about 25 basis points above yield on government benchmark bonds with the similar maturity. The next update on domestic pharmaceutical data. As per the report, domestic pharmaceutical market saw its highest growth rate for 2022 in the November at 17.3%. After both volume sell and price growth pick up compared to November 2021, when it had clocked 6.6% growth. And now Indian pharmaceutical market posted robust growth number last month as anti-infective therapy drove the market demand. The next update on Kalpataru Power. The company's board has approved proposal of raise 99 crore through issuance of non-convertible debentures NCDs. So total 990 NCDs of the face value of 10 lakh each will be issued under the fundraising plan. And last update on NTPC. So NTPC is planning to build massive nuclear fleet that will aid to the nation's push to shift away from coal and curb emission to hit net zero by 2070.
So the company is to install 20 to 30 gigawatts nuclear capacity by 2040. Now India is currently has 22 operational reactors with about 6.8 gigawatts of capacity. So that's it from mine. Now I will hand over to Prabhakar sir. Over to you, sir. Good morning, team. There are many stocks which are moving higher, mainly in banking segment. PSU stocks have been upgraded by few brokerages. So Bank of Baroda, Canara Bank, Union Bank, Bank of India, PNB, Indian Bank, even Karur Vysya Bank, Federal Bank, IDFC First Bank, every small bank is also looking good. Budget around the corner. So infra related stock and cement related stock like JK Lakshmi Cement, ACC Ambuja, everything is seeing buying. Shree Cement, Ramco Cement. No, even in power segment, we are seeing Neyveli Lignite Corporation and REC, PFC lenders to power segment. Yeah, everywhere, the stocks have made 52-week high. And there is a MD who has come in Zensar Tech. I think that is very positive for Zensar Tech because operational CMD is not there. He is not well. So I think somebody taking his place will be beneficial for this stock. We are positive on the market, but it is more of stock specific. Infrastructure stock, cement stock, anything connected with the budget is making some move. There is a news that egg shortage is there in two countries. One is UK and other country is Malaysia. And that is positive for Venky's India. Yesterday, Venky's India was 10% up. And India is the second largest producer of egg. So, this is why, Venky's India, which has corrected for a very long time, yesterday has reversed that fall. LIC, one positive news for LIC. After their IPO debacle, LIC is looking to hire private sector executive as CEO of LIC. So this will be very positive if it happens. Previously, even in PSU Bank, Bank of Baroda had Jai Kumar for 5-year term. He came from Citibank. Kalyan Jewellers targets to open almost 52 showrooms in 52-week in calendar year 2023. They have gone into the franchisee mode, which has started to work out well for them. And this will be very aggressive. So I think re-rating of Kalyan Jewellers will happen if they start to perform. There was a data on pharma. Pharma sector saw its highest growth in domestic market in year 2022. In the month of November, the growth has been at 17.3%. After both volume sales and price pickup, Alchem, Glenmark, Abbott clocked more than 20% growth. In the listed space, there are two unlisted companies which have done 20% above, and Cipla has done 20% sale in domestic. So these are few companies, but we need to understand. There are a lot of Fed, US FDA import alert. Sun Pharma has added previously Glenmark. That is why pharma as a sector is not performing. So we need to be a bit careful on pharma. It can be good for 3 days, 4 days trader, but not for an investor at this point of time. Ministry of Railways, I think it was given in the government website. Ministry of Railways has said 452 railway projects of a total length of 49,323 kilometers. It is costing about 7,33,000 crores, are in the different stage of planning, sanction, execution, out of which 183 is new lines, 42 is gauge conversion, and 227 projects are doubling. So these are few important news. But these stock specific, smaller banks are something which is doing good rather than the large private banks. So I think Bank of Baroda, Canara Bank, Union Bank,
Bank of India, PNB, Indian Bank, even Federal Bank, City Union Bank, Karur Vysya Bank, even South Indian Bank. These are the stocks which will be in focus. Defense related stock like Mazagon Dock, Cochin Shipyard, HAL, BEL, Bharat Forge are looking very good. Bharat Forge yesterday started its rally again. So concentrate on stock which are likely to outperform the market. With that, over to you, Hitendra. Yeah, thank you, sir, and good morning, everyone. हम इस कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं. स्टार्ट करते हैं अपडेट से. जैसे हम देख रहे हैं अभी मार्केट अपने ऑल टाइम हाइज के पास बैंक निफ्टी निकल रहा है, तो सबसे ज्यादा जो हमें मतलब चलन में दिख रही है वो बैंकिंग स्टॉक से दिख रही है. उसमें सबसे लीड में है पीएसयू बैंक, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक, पीएनबी बैंक, और बाकी दूसरे छोटे बैंक्स भी मतलब लीड में है. फॉर एग्जांपल इंडियन बैंक होगा, आईडीएफसी बैंक होगा, करूर वैश्य बैंक हो गया. और बैंकिंग स्टॉक्स में हम देखना चाहेंगे तो साउथ इंडियन बैंक भी अच्छा दिख रहा है हमें. फिर सिटी यूनियन बैंक, फेड बैंक पे भी आप फोकस कर सकते हो. नेक्स्ट डिफेंस स्टॉक्स भी अच्छे लग रहे हैं. डिफेंस स्टॉक्स में देखने जाएंगे तो मजगांव डॉक, एचएएल, बीईएल, भारत फोर्ज जैसे स्टॉक्स पे आप फोकस कर सकते हो. नेक्स्ट अभी जैसे बजट नियर आ रहा है तो इंफ्रा स्पेंडिंग भी गवर्नमेंट की रहेगी ज्यादा. और सीमेंट स्पेस, ये दो ल्यूक्रेटिव सेक्टर दिख रहे हैं. तो इसमें अगर देखना चाहेंगे तो जेके लक्ष्मी सीमेंट, ईसीसी, अंबुजा, श्री सीमेंट, आपको सीमेंट हो गया सीमेंट स्पेस में. और पावर स्पेस में देखने जाएंगे तो निवेल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन, आरईसी, पीएफसी, ये डिविडेंड यील्ड वाइड भी दोनों अच्छे हैं. सो ये सब स्टॉक्स पर फोकस कर सकते हो. डिविडेंड यील्ड भी मिलेंगे और प्लस आपको रिटर्न्स भी मिल सकते हैं. नेक्स्ट हम देखने जाएंगे न्यू एमडी जो है जेंसाटेक के, जिन्होंने अभी रिप्लेस किया ओल्ड एमडी को, क्योंकि वो ऑपरेशन नहीं थे. तो मोर ऑफ एक पॉजिटिव न्यूज रहेगी इसके लिए. फिलहाल देख रहे हैं एग की शॉर्टेज है दो कंट्रीज में, और वेंकी जो है इंडिया का वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है. सो इसके चलते हमने कल वेंकीज में 10% का अपसाइड देखा है, और वेंकीज में थोड़ा सा हमें लग रहा है यहाँ से और अपटिक्स आते हुए दिख सकते हैं. जैसे हम देख रहे हैं एलआईसी भी आईपीओ के बाद अभी सोच रहे हैं कि जो सीईओ को हायर करना चाहेंगे वो प्राइवेट सेगमेंट से करना चाहेंगे. सबसे पहले पीएसयू जो बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया था जय कुमार जी को, जो कि सिटी बैंक से थे. तो एक ओवरऑल अगर वैसा होता है तो एलआईसी के लिए पॉजिटिव न्यूज और एक करना मतलब यहाँ से और बेटर हो सकता है. कल्याण ज्वेलर्स ने कहा कि वे 52 शोरूम्स ओपन करेंगे नेक्स्ट 52 वीक्स में कैलेंडर 23 में. और बेसिकली इनका जो फ्रेंचाइजी मॉडल है वो अच्छा खासा चल रहा है, तो उसे वो आगे पुश करना चाहेंगे. एक फार्मा सेक्टर में एक रिपोर्ट थी. फार्मा सेक्टर में देखा जाए हाईएस्ट ग्रोथ दिखेगी तो नवंबर 22 में थी, जो कि 17.3% थी वॉल्यूम सेल्स प्राइस के हिसाब से. एल्केम और अवार्ड इसमें लीडर, जो कि 20% अप थे. सिप्ला का 20% था डोमेस्टिक में. बट अभी फार्मा सेक्टर में एक इशू ये है कि यूएस एफडीए का जो बार बार इनको जो अलर्ट्स और जो इनकी रहते हैं उसके चलते स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर पाते. जैसे हमने सन फार्मा में कल इम्पोर्ट अलर्ट देखा तो उसके चलते सन फार्मा का नीचे था. तो एक ये ट्रेडर के लिए देखा जाए तो 3 से 4 दिन के लिए आप ले सकते हो, बट अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो ये सही मौका नहीं है. मिनिस्ट्री ऑफ रेल ने कहा है कि 452 प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि 49,323 किलोमीटर है. टोटल इन्वेस्टमेंट 7.33 लाख करोड़ का रहेगा, और ये डिफरेंट प्लांट्स करेंगे. 183 नई लाइन सेटअप करेंगे, 42 को गेज कन्वर्जन रहेगा, और 242 लाइन स्टेबल होंगी. नेक्स्ट न्यूज में हम देखना चाहेंगे जैसे एचडीएफसी बैंक ने कहा कि उनकी जो डिमांड है टियर 2 बॉन्ड की, जो कि 15,000 करोड़ एक वीक की थी, और वो एक नए बॉन्ड्स के साथ आएंगे 5,000 करोड़ के लिए, और इन्वेस्टर्स से इशू करवाएंगे. कल्पतरु पावर ने भी कहा कि उन्होंने जो रेज करना चाहते हैं 99 करोड़ एनसीडी के थ्रू. इसके लिए उन्होंने टोटल 990 एनसीडीज इश्यूज करेंगे 10 लाख ईच के लिए. नेक्स्ट आईसीआईसीआई बैंक भी रेज करने वाला है 5,000 करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के लिए, जो कि फंडिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए करेगा. इसका कूपन देखा जाएगा तो 7.63% रहेगा, जो कि 25 बेसिस पॉइंट है, जो कि गवर्नमेंट के बेंचमार्क से. अगला न्यूज देखा जाएगा तो एनटीपीसी जो है वो इंडिया का टॉप पावर प्रोड्यूसर हो गया है, और उन्होंने प्लान किया है मैसिव न्यूक्लियर फ्लीट के लिए, जो कि नेशन को पुश करेगा. और कोल से जो कार्बन एमिशन हो रहे हैं उसको कम करने के लिए, और नेट जीरो हो जाएगा 2070 तक. करंटली देखा जाए तो इसके 22 रिएक्टर्स है, जो कि 6.8 गीगावाट कैपेसिटी प्रोड्यूस करते हैं. जीएसपी के लिए भी न्यूज इन्होंने कंप्लीट किया ऑप्शन ऑफ पॉइंट पावर में, जो कि 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, अंडर कंस्ट्रक्शन था प्लांट में, जो कि अंगुल में, और इसकी फुल पेमेंट की उन्होंने 410 करोड़ की.
अदानी एंटरप्राइज ने भी कंपनी एक्वायर की 100% स्टेक, जिसमें अलुवियल मिनरल रिसोर्सेज है जो कि अडानी इंफ्रा ने की है। अलुवियल मिनरल रिसोर्सेज को देखा जाए तो माइनिंग में और मिनरल्स और अदर एक्टिविटीज में बेसिकली इन्वॉल्व है। ल्यूपिन की भी न्यूज है कि ल्यूपिन ने एक अपॉइंट किया है स्पेरो गेवेरिस एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जेनेरिक्स के लिए, बिजनेस के लिए। ये जो है वो रिसेंटली सर्व किए थे प्रेसिडेंट ऑफ स्पेशलिटी जेनेरिक्स, जो कि मेलिंग क्रोडोट फार्मा है और यूएस इंजेक्टेड में हिकमा में थी। मैक्स फाइनेंशियल पे ये अपडेट है कि कंपनी ने कहा है कि उन्होंने एक्वायर किया है बैलेंस 5.17% स्टेक, जो कि मैक्स लाइफ कंपनी का है, जो कि मित्सुबिशी सुमिटो इंश्योरेंस कंपनी से, जापानीज कंपनी से एक्वायर किया। इस ट्रांजैक्शन के बाद शेयर होल्डिंग रहेगी मैक्स लाइफ की टोटल 87%। सन फार्मा पे ये क्लैरिफिकेशन आया है और नोट आया है, इम्पोर्ट अलर्ट था वो हलोल फैसिलिटी का था और वो उससे रिवाइज रेवेन्यू गाइडेंस देंगे करंट फाइनेंशियल ईयर के, तो ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा स्पेशलिटी रेवेन्यूज पे। यूएस की सप्लाई जो हलोल कंट्रीब्यूट करता है 3% कर रहा है उनके FY22 के रेवेन्यू से, और इसमें जो सेल्स है वो एग्जेंटेड प्रोडक्ट्स के साथ भी एडेड है। सो यूएसएफडी ने इसमें से एक्सक्लूड किया 14 प्रोडक्ट जो कि इम्पोर्ट अलर्ट पे थे। रेडगेन टेक्नोलॉजीज ने उनकी जो सब्सिडरी है रेडगेन यूके, उन्होंने एक शारजा बेस्ड कंपनी में इनकॉर्पोरेट किया है और बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और मार्केटिंग टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ये न्यू एंटिटी स्ट्रेंथन करेगी कंपनी के ऑर्गेनिक ग्रोथ स्टोरी को। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि रोड कंस्ट्रक्शन नवंबर 22 पे देखा जाए तो 706 किलोमीटर थी, जो कि 6% हायर थी YOY। H2 में भी उन्हें लगता है कि और अच्छी पिकअप हो सकती है और रोड कंस्ट्रक्शन और आगे चल सकती है। मिस्टर गडकरी ने ये भी कहा कि जो वो एक लॉन्च करेंगे श्योरिटी बॉन्ड्स, जो कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिसंबर 19 के में, और ये बूस्ट करेगा लिक्विडिटी सेगमेंट में, और इंफ्रा जो सेक्टर रहेगा उसको वो फ्री अप करेगा कॉन्ट्रैक्टर वर्किंग और कैपिटल जो उनका अटक जाता है, और उससे बैंक गारंटीज भी दे सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द मॉर्निंग कॉल।